Good morning, beta. Good morning, ma'am. I'm just waiting for other people to join in 2 more minutes, yeah? Yes, ma'am.
All right, turn on your cameras, please, quickly. Let's start the class. Okay, let's start. Yesterday, we have done the mole concept, right? And we discussed about, wait, hold on. Yes. Yes. I'm going to present the same screen. I'm going to continue from there. Okay, can you see the screen? This is where we ended yesterday, correct? Correct, beta? Yes. Yes, ma'am. So calculate the number of moles. And helium when 88 grams are present in a mixture, 64 grams are present in a mixture, and 8 grams are present in a mixture. Can you calculate individually the moles of these three? Then we can move ahead to the next ones, please. Quickly, Vijay. And I hope calculation of moles is easy now, not a problem, so that we can move to more tougher problems. Yes? Yes, beta? 2, 2, and 4 moles. So 88 divided by 44 is 2 moles of CO2, right? 64 divided by 32 is NO2 is 2 moles. Number of moles of helium are 8 divided by 4. 4 is the mass, bache, of helium. Yes, so 2 moles again. Correct ना? 2 तो उसमें protons होते हैं. ठीक है सुचिता? ठीक है, so don't make that mistake. ठीक है? Yesterday we did isotopes, isobars, we did all of that. A little bit again here I'm going to. So whenever we say that, mass is given, what about volume, right? So if volume is given, what to do? So we say that 1 mole has 6.023 into 10 raised to power 23 particles or entities or ions or molecules. But if we talk in terms of volume of a gas, right, then 1 mole occupies 22.4 liters at NTP and 22.7 liters at STP. It will be mentioned in the exam what they are, what they are what they are telling you to do. Like NTP, they'll tell you that this gas is at NTP. STP, they will mention. Okay. Okay. So NTP, the conditions are 20 degrees Celsius, 1 atmosphere pressure. And STP is 0 degrees Celsius, 1 atmosphere pressure. ठीक है? Pressure is force upon area. Okay. Now the units of pressure. 1 atmosphere pressure is 1.01325 into 10 to the power 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स, दिस इज द एसआई यूनिट. 760 mmHg, millimeter of mercury. 76 centimeter of mercury. 1 bar approximately. Okay, this is what you're supposed to write. Quickly write it down. All the units of pressure I have told. Okay. ठीक है बच्चे, you've noted it down, both of you. गौरी, I can't see like the whole Yes, ma'am. face. कैमरा थोड़ा नीचे कर लो. This दांत better? असली है? दांत असली है तुम्हारे कि डेंचर्स हैं? हंसती नहीं हो क्योंकि तुम. ये सुचिता भी पहले हंसती नहीं थी तो उसको फिर बोलना पड़ा कि बेटा असली दांत है तो हंसो. कल तुम इतना सीरियसली बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने कुछ भी बोला गौरी को तो गौरी मुझे मार देगी. मैं कही नहीं नहीं, हंसती नहीं. ओ अब पता चला असली है, असली. पूरे ऊपर वाले असली है कि नीचे वाले भी असली हैं? नीचे वाले भी ठीक है, असली है. नीचे वाले दोनों आपको टाइम के दिखाओ. बाद. मेरे तो असली हैं. मेरे अभी तक मतलब मेरी है, आई एम ओल्ड बट असली. You look really young, to be honest. थैंक यू. ऐसा है, मैं हेयर कलर करती हूँ ऐसा. हाँ मैं थोड़ा ओल्ड. ठीक है, By सुचिता the भी way, पहले हंसती नहीं थी. Mama, wanted to ask, इस class में there are only like 3 or 4 people as of now, or? बेटा देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं. तो अभी जैसे जैसे Okay, जैसे जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे ना तो और भी लोग आएंगे. तो okay. मैं इट इज वेरी गुड कि आप लोगों को एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है. तुम मैं कल यही डिस्कस कर रही थी प्रांजल से. मैंने कहा प्रांजल ये दोनों लकी हैं लड़कियां, जब तक हम आगे बढ़ेंगे तो इनके जो मेन फंडामेंटल यूनिट्स है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे. तो तुम्हारे लिए सही है ये चीज. तो Yeah. मैं हमेशा सारे बच्चों को ये बोलती हूँ. मुझे कल जिसकी मैं बात कर रही थी ना, सृष्टि, वो लड़की चाहे वो एक अकेली आती थी. कई बार ऐसे होता था कि कुछ बच्चे नहीं आ रहे. वैसे तो उसमें 22 बच्चे थे. अब एंड तक ऐसा हुआ कि कोई बच्चा बिजी हो गया, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है. एक टाइम पे ऐसे होता था कि वो सारे बच्चे चले जाते थे तो अकेली बैठ के मुझसे डाउट पूछती थी. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हो. कई बार ना एक टर्म है ना, फोमो, है ना. तो वी विल डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ वी नीड मोर पीपल हु कैन क्रिएट देयर ओन पाथ, देयर ओन वे, True. है ना. सो बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन Hmm. हु क्रिएट्स हर और हिज लाइक ओन पाथ. आई टेल द सेम थिंग टू माय सन. मैं अपने बेटे को भी ये सेम चीज बोलती हूँ, बेटा सेम अपनी पाथ बना, तेरे को क्या करना है तू वो देख. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ही वांट्स टू गो, समटाइम्स ही इज वेरी टायर्ड. मम्मी फिर बाकी सब खेल रहे हैं, बाकी मुझे भी खेलने जाना है, वो छोटा है तो मुझे भी खेलने जाना है. तो मैंने कहा बेटा इफ यू आर टायर्ड गो एंड स्लीप, बिकॉज Hmm. इफ यू जस्ट प्ले लाइक दैट यू विल गेट मोर टायर्ड, यू मे फॉल सिक ऑल्सो. तो ही गेट्स True. अप रिफ्रेश्ड. इज यू आर राइट कि मुझे 3 घंटे सो के मुझे बहुत अच्छा लगा. छोटे बच्चे तो ज्यादा सोते हैं, लेकिन मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है मम्मा, क्या अच्छा लग रहा है, यू मेड मी रेस्ट. तो अपनी पाथ जब खुद क्रिएट करने लगोगे ना, आपको इतना मजा आने लगेगा. थोड़ा थोड़ा फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. इट विल मतलब इट विल ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज, बिकॉज आई एम Oh. टेलिंग यू, आई एम पार्ट ऑफ दैट. आई एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी. मैं वो पाथ क्रॉस करके आ चुकी हूँ मैं. देर विल बी अ टाइम व्हेन इट विल ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज. और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, उस टाइम पे आपके आसपास कोई नहीं होता जिससे आप एक्सप्रेस कर सको. सिर्फ आपके पेरेंट्स होंगे या आपका पार्टनर. जैसे मतलब आई एम मैरिड तो मेरे पार्टनर है मेरे साथ कि ठीक है यार माय हस्बैंड इज देयर, तो मैं उनको बोल सकती हूँ. बट वो भी वो समझ नहीं पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि वो सुन लेंगे, वो आपको वो कुछ फील गुड या चॉकलेट दे देंगे या आपको कुछ मतलब अच्छा खिला देंगे, या जो भी आपको पसंद है वो मतलब दे. मम्मी क्या करती है, मम्मी अच्छा खाना बना देती है ना, मम्मी के चीर अप फैक्टर हो जाता है वो. या मम्मी आपके साथ बैठ के चल यार शॉपिंग चले, चल यार ये खा के आए, तो वो चीज हो जाती है. बट वो जो इंटरनल जो फीलिंग है ना, जो इंटरनली जो आप फील कर रहे हो, वो सिर्फ आप और आपके अंदर का जो सोल है, जो भी उसको बोलते हो आप, अंदर का जो आपका जो Consciousness, उसी sort का of.
उससे उसके अलावा आपको इतना अच्छा कोई नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हो। वो Hmm. आपको इतना अच्छा कोई नहीं जानेगा जितना वो इंसान जान रहा है जो आपके अंदर है। तो आप अपनी मम्मी को भी बता दोगे, वो भी आपको सुन लेंगी वो, पर हेल्प आपकी कौन करेगा? पढ़ने कौन आएगा आपकी जगह? आपको आप फोर्स करके अपने आप को जगाएगा कौन? वो सिर्फ आप ही कर सकते हो ना। Hmm. मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात फील होती है, और आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी लाइक हेल्पफुल पीपल अराउंड मी, लाइक माई इफ आई टेल माई मॉम, मतलब मैं कितनी बार उनको डांट भी देती हूँ, अरे यार आप इधर उधर लगी रहती हो, मेरी बात सुनो, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टिल आई हैव अ चाइल्ड, आई एम अ मदर, फिर भी अब मेरे को मम्मी से बात करनी। कितनी बार ऐसा लगा, शी इज लिसनिंग टू मी, शी इज टेलिंग मी द सोल्यूशन ऑल्सो, बट एट द एंड वो मुझे खुद इम्प्लीमेंट करना है। True. जब तक मैं वो नहीं करूंगी तब तक मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। Hmm. तो वो You're एक the वो one who can help yourself. हाँ सॉरी, You are the only one who can help yourself. True. यस, वो एक एक कुछ था वो, एक वो लेडी बोलती है, नोबडी इज कमिंग, नोबडी इज कमिंग टू रेस्क्यू यू, Save है ना? yourself. नोबडी इज कमिंग टू रेस्क्यू, डोंट वेट फॉर दैट पर्सन हु विल कम एंड रेस्क्यू यू, वो मतलब रपंजल ने भी तो खुद के बाल नीचे गिराए थे तब तो कोई आया था ना बचाने, मतलब इफ अगर आप उसको वो स्टोरी में वो ऐसे ही बताते कि इवन रपंजल हैड टू पुट डाउन हर ओन हेयर सो दैट शी Hmm. कुड गो डाउन, यू नो। वो बोलते हैं ना कि कोई तो आएगा प्रिंस चार्मिंग, वो बताएगा, वो खुद के बाल तो उसने खुद ही गिराया ना, थोड़ा ना प्रिंस चार्मिंग ने गिराए थे वो बाल। सही तो बात वो है। उसकी हेल्प उसने खुद करी, आई मीन अननोइंगली, अगर आप उस फेरी टेल को फ्लिप करके देखो तो वो यही है कि वो अपनी हेल्प खुद करने आई। तो वो चीज Hmm. आप फाइंड पीपल हु लव यू, लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स आर देयर, राइट, फ्रेंड्स आर देयर, बट उसके अलावा आप अपने साथ खुद बैठो 10 मिनट, आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने साथ Hmm. क्या कर रहे हो, दूसरे जो कर रहे हैं उनको छोड़ दो, जो दूसरे कर रहे हैं उनको रहने दो, क्योंकि वो दूसरे आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और आप सोचो यार हमारे साथ वाले घर में ही तो रहते हैं, हमारे दोस्त ही तो है, क्यों नहीं जी सकता वो, हमारे जब हमारे को जानता है, सब हमारे जानता है, वो तुम्हारी लाइफ नहीं जी रहा ना। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारी लाइफ नहीं जी सकते, जो तुम्हारे सिबलिंग्स है ना वो भी नहीं जी सकते, जो रियल सिस्टर्स हैं ब्रदर्स हैं, नहीं जी सकते। वो तुम्हारी अपनी स्ट्रगल्स रहेंगी, तुम्हारी अपनी हाई पॉइंट्स रहेंगे, तुम्हारे अपने लो पॉइंट्स रहेंगे, कोई नहीं जिएगा वो तुम्हें अपने, पर उसमें से हैप्पीनेस यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज इस जर्नी, ये जो जर्नी होती है ना आगे सक्सेस की, इसमें रोना ज्यादा होता है, सक्सेस ही देखते हैं सारे लोग, क्लैपिंग करते आते हैं एंड में, पर वो जो आप रोए हो ना वो आप अकेले रोओगे, सक्सेस में बहुत लोग आ जाएंगे साथ में, पार्टी करने तो बहुत लोग पार्टी करने आते हैं ना बहुत लोग, जो पार्टी के Hmm. बाद कचरा समेटने रहते हो तो तुम ही समेटना है ना, देखा है ना, कभी हाउस पार्टी होती है, घर पे होती है पार्टी, तो उसके बाद मम्मी Yes. बेचारी लगी रहती है अकेले, है ना, बहुत कम होता है ना, वो ही सब कुछ करती है। पार्टी में एंजॉय करने आएंगे लोग, ये सोच लेना, पर पार्टी के पहले जो प्रिपरेशन है वो तुम्हें करनी पड़ेगी, दैट इज द प्रिपरेशन, Hmm. डू दैट, और किसी को कॉपी मत करना, Yes, बी ma'am. योर ओन I सेल्फ। think that was something I really needed to hear right now. Thank you. Yes, I just thought that yesterday you didn't open up that much, and I was like, I'll talk to her when the right time comes, and the Babaji brought the right time. I'm a Sardarni, so you'll always hear me saying Babaji. तो वो बाबाजी सही टाइम लेके आएंगे आपके लिए, वो ऑर्गेनिकली बन जाएगा, और आपका क्वालिफाई होना ही है, आप सोचो कि ये होना ही है, आप ये लेके चलो। वो दिलजीत कहता है ना मैनिफेस्टेशन, वो Hmm. सच है, वो सच है, Hmm. आई हैव डन दैट, मेरे साथ हुआ है। वो एक आप मैनिफेस्टेशन बनाओ कि ये होना है, दिस इज अ रियलिटी विच इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि हम मोस्टली कहते हैं यार ये होगा, इसके बाद ना मैं बैकअप ले लेती हूँ, इसके बाद ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते, मेरे पास बैकअप ही नहीं है, मेरे साथ यही होना है, मैं जी रही हूँ वो लाइफ। Okay. आई डोंट नो इफ यू हर्ड और नॉट, दिलजीत इन हिज यंगर डेज वो क्या करता था, टॉयलेट में मिरर के सामने ऐसे बिहेव करता था जैसे उसके सामने 10,000 लोग बैठे हुए हैं, उसको सुन रहे हैं। ही यूज्ड टू बी, तो वो कह रहे थे कि आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि 10,000 1 लाख लोग उसको सुन रहे हैं, उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुका है ये, उसको ऑलरेडी उसको पता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अब वो बस रियलिटी बन रही है, वो जी रहा है वो चीज, कुछ चीज को वो माइंड में तो मेकअप कर चुका है, आप मेरा सुपरस्टार हो, वो माइंड में मेकअप कर चुका है। आप माइंड में मेकअप कर लो कि आपको जाना है अच्छे कॉलेज, बस फिर वो माइंड अपने आप वो रास्ता ऑर्गेनिकली बनाता जाएगा,
आपसे कोई पूछेगा यार आज आप पार्टी में नहीं आना, मुझे ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कर रही हूँ मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं, फिर आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि आप माइंड में तो वो सक्सेस जी रहे हो ना, अच्छे कॉलेज वाला। फिर आपको रिग्रेट नहीं, यार मैं क्यों नहीं जा पा रही यार, नहीं, मैं वो अच्छी ड्रेस क्यों नहीं पहन पा रही यार, मैं तो पजामे में बैठी हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं होएगा, और बहुत बार ऐसे आता है, ये आएगा मन में, ये आएगा, डोंट वरी, आएगा। मैं आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप्स, और मैं कोई बहुत स्टोरी लाइन तुम्हारे लिए वो ऐसे नहीं क्रिएट कर रही, ये सब आएंगी मन में बातें, मेरे साथ भी बहुत होता है। आई एम अ मदर टू अ यंग किड, सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस, अदर पीपल आर गोइंग अराउंड पार्टीइंग इधर उधर, मुझे पता है कि मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो मेरी असली पार्टी है, मेरी असली पार्टी इन लोगों के साथ है, उन लोग के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है आई कांट गो, ऐसे ही बड़ा अच्छा लगता है यार, दे आर वेयरिंग सच नाइस, मैं आई एम अ पंजाबी यार, आई एम अ फुल ब्लोन पंजाबी, मेरे को तो वैसे ही वैसे अच्छा लगता है सब चीजें, तो अच्छा लग रहा है यार, ये लोग जा रहे हैं यार, कितना अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, अच्छा, इतना अच्छा फील हो रहा है। क्या करना है, मेरी असली पार्टी तो तुम लोग हो यार। मेरी असली पार्टी वो था जब उसने मेरे को फोन करके बोला मैम 99.9 परसेंटाइल, वो क्या मजे थे उस दिन, उस दिन मैंने खूब खाया, अच्छे से खाया, उसकी पार्टी मैंने कर ली। सो वो एक वो आई थिंक वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन कि यार मेरे बच्चे मेरे पास आके बोले तो वो इट्स ग्रेट, इट्स जस्ट ग्रेट। और मेरे घर में अभी रिसेंटली संडे को मेरी हाउस वार्मिंग थी नए घर की, तो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट 13 साल पुरानी, वो यहीं पे रहती है मेरे घर के पास, पहली स्टूडेंट मेरे हाउस वार्मिंग पे आई थी, तो वो इतना सरियल मूवमेंट था मेरे लिए कि उधर माय फर्स्ट स्टूडेंट वाज देयर, एंड शी सेड के वो हमेशा मुझे बोलती, कह रही मैम नोबडी कैन लव मी द वे यू लव मी, हर मॉम डाइड ऑफ कैंसर, बट वो मुझे उस दिन भी आके बोली, कह रही मैम आपके जैसा प्यार सिर्फ मम्मी करती थी मेरे से। वो वो मोमेंट कैसा था ना, मतलब वो मोमेंट सारी दुनिया से ऊपर मोमेंट था मेरा, तो जाओ पूरी दुनिया जहां जाती है जाए, मेरे को ये चाहिए। और वो मेरे बच्चे ऐसे हैं, कहीं ऐसे हैं, तो मेरे बेटे के लिए भी ऐसे, मैम आप कहीं जा रही हो क्या कल, मैंने कहा क्यों, तू तो अमेरिका में है। अब मैं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, आई टीच विद दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो, मैम आप कल घर पे हो क्या, मैं तू तो जा, तू तो अमेरिका में, तू क्यों मेरे से पूछ रही है, कह रहे नहीं मैम कल मैं लैंड कर रहे हैं, घर में सामान रख के आपके घर आएंगे, घर में सामान रखे हो मेरे पास आ जाए, और वो मेरे बेटे को भी गिफ्ट देंगे। मैंने कहा तुम मेरे बेटे को, तुमको बोला है मेरे यहाँ नो गिफ्ट पॉलिसी है, आपको थोड़ा ना दे रहे हैं, हाँ हटो, आपके बेटे को दे रहे हैं, हमारा हमारा भी तो है कुछ, ऐसे करके वो प्यार है, तुम सोचो कि वो प्यार है। तो ये जो चीजें है ना, ये आप मैनिफेस्ट करो कि मेरे को लोग इतना प्यार करेंगे, और वो जब ये कब आएगा, जब हम किसी की लाइफ में, हम जो उसका डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था हम उसको आसान बना देंगे, तो वो जो ये पार्टी, ये रंगीन चीजें ना, सब आपको फीकी लगने लगेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ दिस मोमेंट इज इम्पोर्टेंट व्हेन आई एम विद यू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज जब आप किताबों के साथ हो ना, तो वो आपका मोमेंट है, उसको एंजॉय करो, उसको चेरिश करो, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे को अच्छे कॉलेज जाना है। ये मम्मी को प्राउड बनाना है, डैडी को प्राउड बनाना है, वो है, वो सब मत, अपने दिमाग को वो मत खिलाओ, क्योंकि मम्मी और डैडी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री ऑलरेडी होगी, आपकी डिग्री वो ले नहीं लेंगे। आई एम अ पीएचडी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाए थोड़ा, मेरे डैडी के नाम के आगे लगाए, या मेरी मम्मी के नाम के आगे, दे आर प्राउड ऑफ मी, आई नो दे आर प्राउड ऑफ मी, मेरे भाई आई एम कलकत्ता से है, मैं आईआईटी से हूँ, दे आर प्राउड ऑफ अस। मेरे डैडी बहुत शान से बोलते हैं, एक बच्चा आईआईटी, एक बच्चा आईआईएम से है, तो वो उनके लिए प्राइड है। बट वो सोचो कि वो हमारी अचीवमेंट है, वो हमने अपने लिए भी किया। जब ऐसा सोचने लगोगे ना, इनसे मम्मी चाची खुश होंगी, चाचा खुश होंगे, मम्मी डैडी खुश होंगे, ये सब अपने दिमाग को फीड करना बंद कर दो। वो दे आर एनीवेज प्राउड ऑफ यू, बिकॉज तुम उनके बच्चे हो, है ना, दे आर एनीवेज प्राउड ऑफ यू, यू गाइस आर गुड किड्स ना। तो अपने लिए, आप अपने लिए अपना अपना मैनिफेस्ट करो, अपना ये मुझे अच्छे कॉलेज जाना है, फिर देखना तुम, क्या तुम्हारा समझ ही नहीं आएगा कि क्या मैजिक कर दिया बाबा जी ने, ऐसा मैजिक वीव किया कि यू कम आउट एज अ विनर। मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज दिलजीत सेड इट, वो तो उसने अपने, वो वही ना, वो जो कर रहा था वो उसने दुनिया के सामने लाया, बट वो शुरू से है, जैसे आप जीते हो ना, आप उसको जी रहे हो, आप उसी को जी रहे हो, वो सच हो जाएगा। आप मिजरी जियोगे तो मिजरेबल मिजरेबल होना ऑब्वियस है, मिजरेबल मत जियो, "अरे, मैं तो सारे चले गए, मैं नहीं गई, अरे मैं खुश हूँ यार, मैं अपनी किताबों के बीच में,
जिसके साथ जो होना था वो अपना देखेगा, वो अपना देखेगा, देखता रहेगा। एंड देर इज नो जल्दी, देर इज नो लेट। लोग कहते हैं ना, ये एक लड़की का 1 साल मिस हो गया, 1 साल ड्रॉप हो गया। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलेंगे, बोलेंगे लोग, बोलेंगे। डोंट वरी, उनको जाने दो ना। अमेरिका हमारे से 12 घंटे पीछे है अभी, वहां पे रात हो रही है, तो हमारे अमेरिका वहां से पीछे हो गया। हमारा अपना टाइम लाइन है, ऑस्ट्रेलिया में अभी 5.5 घंटे आगे है, वहां दोपहर के ऊपर हो चुका है, तो अब ऑस्ट्रेलिया वहां से आगे है। मैं अपने आप से आगे हूँ, बस मैं अपने आप में खुश हूँ बस। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया बैठी हूँ, चाहे मैं अमेरिका बैठी हूँ, चाहे मैं इंडिया बैठी हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे हूँ। है? वो करो, वो बड़ा जरूरी है। बाकी कहीं पे भी बैठो दुनिया में, आप आगे ही हो। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से बहुत पीछे है, इसका मतलब वहां तो और भी घंटे का डिफरेंस है, आप क्या करेंगे? तो वो चीज बेटा, दैट इज आई थिंक दैट रियलाइजेशन, इट हैपेंड टू मी क्वाइट लेट इन लाइफ, बट द मोमेंट इट हैपेंस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज, अरे दिस इज व्हाट वी वर मिसिंग इन लाइफ। ये चाहिए था अपने को, ये चाहिए था, ये चाहिए मेरे को, ये करो, ऐसे करो, ठीक है, ये करना, Yes, ma'am. ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डू दिस 5.6 liters of a gas has how many moles? Can you tell? 0.25. हाँ बेटा। 0.25 moles. तुम्हारी आवाज पता नहीं सुचिता क्लियर नहीं आती है, तुम्हारा कुछ तो आई थिंक माइक्रोफोन में गड़बड़ है। 22.4 लीटर 1 मोल, and 5.6 will be 22.4 divided by 7. कितना हुआ? 1/4.25 मोल्स, ठीक है। ये हो गया, हमने मोल्स निकाले आज। अब इसके बाद हम व्हाट वील डू इज quickly we'll run through the some basic, like very basic definitions. Atom is the fundamental unit of matter, right? Element is the purest form of matter, correct? Purest form. Fundamental unit. I want to go up to mixture. Molecule is what? Can you tell me what is molecule? A combination of atoms. Homo or heteroatomic combination in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. What is a compound? When two elements or two atoms, they react in a fixed ratio by mass. Two elements react in a fixed ratio by mass. What do you get? You get a compound. But react का मतलब होता है chemical reaction, right? It can be nuclear reaction also, but right now we are concerned about chemical reaction. Nuclear reaction में disintegration is there, or combination of two nuclei are there, correct? To give you a new nucleus, right? That is a nuclear reaction. Okay, so now when we talk about mixture, I want to go up to here. We say it is any ratio, any no specified ratio by mass, any ratio. Okay. अब मिक्सचर में देर इज homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous.
इसमें आपके दो आते हैं, एक तो आता है कोलॉइड, एक आता है आपका सस्पेंशन। और यहाँ पे आता है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में आपका देर आर टू ways to describe a true solution. One is qualitative concentration term, the other is quantitative concentration term. Okay, now qualitative is either concentrated or dilute, we say na, aise bolte na, right? This is of hardly of any use to us, but in lab we say hi, we can use all this, right? Quantitative is when you are dealing with quantity, so temperature or volume dependent terms are there, right? And then there is mass dependent terms. We are going up to that. So first in this is molarity, number of moles of solute divided by volume of solution. Because we are talking about homogeneous mixture, right? So homogeneous mixture mein there is something called a solute and there is something called a solvent. So solute is the one which is present in lower quantity, solvent is the one which is present in higher quantity, right? Okay. Now yesterday I had told you I told you to I told a certain chronological order to do the problems, है ना, बताया था ना, पहले NCERT फिर NCERT exemplar, ये करेंगे ऐसे करेंगे. So what you can do after these concentration terms is chapter 1 में whatever there are, right, mole में जितना भी है, plus 12th वाले में solutions वाले chapter में there are concentration, there are questions, right? Finish that also. So in one go you can finish two things. Like this I will combine two to three things like that. So आपका एक यही बचा है. This is how you can cover the entire thing. ठीक है? Then you have normality. Number of gram equivalents of solute. I'll tell you what this is. Volume of solution in liters. इसी week में I will try that you finish your this chapter. 2 more classes. I will finish the chapter and today I will give you a worksheet so you do it and then you ask me the doubts on Saturday so that we can quickly go to structure of atom next, है ना, फटाफट से उसको खत्म करते हैं, ठीक है? So we have this number of gram equivalents. So normality denoted by capital N is given mass of solute molar mass of solute divided by n factor वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अभी 1000 से आपने कर दिया तो ये ml में, ठीक है? But if you clearly observe this particular thing, this is exactly molarity, correct? Molarity है ना, given mass upon molar mass, number of moles. So normality is n into molarity. ठीक है? This is n into molarity. n factor ऊपर चला जाएगा ना बेटा? This is going to go up. ठीक है? Then another concentration term is the third one, which is percent volume by volume. Volume of solute, volume of solution into 100. Obviously same units होने चाहिए.
If you see any of the cough syrup medicines, right? Usme the active drug is always present in volume by volume because the active drug is a liquid in nature. तो liquid ऐसे ही concentration उसकी express करते हैं, right? Percent weight by volume, mass of solute, volume of solution into 100. All right, बच्चे. This is clear. Can I go to the next set of the terms, please? फिर numericals करते हैं सब पे, right? Then next is percent weight by weight. Moles of solute. Mass of solvent, okay? Mass of solvent in kg. Not solution, solvent, okay? Mole fraction. Let's say you have two components A plus B. So mole fraction of A is denoted by this symbol chi, not chi, chi. Number of moles of A divided by total number of moles. Mole fraction of B is number of moles of B divided by total number of moles. Okay, mole fraction हो गया ये. Okay. Then you have ppm, number of parts of solute, total parts in solution, parts or particles. ppb is the same thing into 10 raised to power 9. Okay, written beta? Yes, okay. Let's do the numericals. Quickly you do this, then we will do other things. Okay.
So what is the answer over here? Around 1.7. So don't take exact masses. Like, so 49 divided by 98 into 2 molar. Yes, correct. Yeah. Okay, correct, Suchita. Right. So let's find this out. Now, if you correctly observe, if you have a, let's say if you have a sweet drink, like if you have a lemonade, okay? If there is too much of sugar in it, you feel less lemon and more sugar. What are you going to do? You're going to add more water, right? Maybe add more lemon also. Is that going to reduce the amount of sugar in it? No. Sugar is anyways the same, right? मुझे जितनी डायबिटीज होनी है वो होके ही रहेगी, चाहे मैं उसमें कितना नींबू डाल दूं, कुछ भी कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं है, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से यू हैव a 2 molar HCl with you, okay? And you wish to make 0.05 molar HCl, and you wish to make 750 ml of this. My question is, इसका आपके पास whatever amount is available in the laboratory, है ना, काफी ज्यादा है आपके पास, तो इसका कितना अमाउंट लोगे, कितना ml या कितने लीटर्स आप लोगे कि आपके पास ये आ जाए? डू इट. हाँ जी बेटा जी, हो गया जी. 18.75 ml. हाँ जी, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? नाउ मोलैरिटी के लिए यू यूज 2 into x. Basically you have to equate the number of moles. The number of moles present in this quantity will be equal to the number of moles in this quantity. ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? 0.75 लीटर्स. अब मोलैरिटी में लीटर्स यूज करते हो ना, है ना? तो x क्या आया?
बस कितना आ रहा है अगर इतना ही किया तो? इतनी यही किया है? कितने लीटर आ रहा है बच्चे? 18.75 0.7. ml. कितना कितना फिर से कहना। 0.7. 13.7? 0.7 for some reason. सुनाई नहीं दे रहा यार। There's too much of noise here also. 2.75। 18.75. तो वो तो मिलीलीटर्स हो गया ना। 13.75 ml है ना, यही है ना? ठीक है बढ़िया। ओके। अब एक और प्रॉब्लम देते हैं इसी से रिलेटेड। यू हैव 2 molar HCl and you have a 500 ml of that. You have a zero point 1 molar HNO3 and you have 250 ml of that, right? Plus इसमें आपने ऐड कर दिया 250 ml of water, right? What is the resulting molarity of the solution? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। What is the molarity of water? नहीं, वो तो सॉल्वेंट है ना, वो तो सब में कॉमन है। तो आप 500 ml में भी तो HCl itself is HCl, तो आप कैसे बनता है? HCl is a gas which is dissolved in water ना। HCl तो गैस होती है ना बच्चे, है ना। नाइट्रिक एसिड भी कैसे बनता है? NO2 और NO3 को वाटर में डिसॉल्व करके नाइट्रिक एसिड बनता है ना। तो पानी की मोलैरिटी तो फिर सब में कॉमन होगी। तो सॉल्वेंट की तरह लोगे ना बेटा जी, है ना। ठीक है। हाँ जी, आंसर।
1.025. So what you basically did was 2 molar into 0.5, right, plus 0.1 into 0.25, right, is equal to x into कितना वॉल्यूम हो गया, 1 लीटर हो गया ना, तो टोटल 1 लीटर हो गया ना, इसको सिर्फ वॉल्यूम में इंक्लूड करोगे ना बच्चे, करेक्ट। तो आपका x कितना आएगा, जो भी यार, इसको प्लस कर लो, 1 प्लस कितना हो गया, 2.5 into 10 2, है ना, ये हैगा ना, ये कितना है भाई, 1.02. इसको तुमने वो करा है ना, ये अच्छा, राइट, ये हो जाएगा ना, मोलर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, let's say you have 1 molar HCl and you have a 500 ml of this, right? Plus you have 0.5 molar of NaOH and you have a 250 ml of this. Now what is the resulting molarity? अब बताओ. And resulting pH of the solution. pH तो चलो निकाल लेना बाद में. मैम जी बेटा जी, आगे आंसर. 0.83 molar. हाँ जी. 0.83 molar. तो NaCl प्लस वाटर, पहले तुम दोनों अपना ऑडियो चेक करवाओ यार, ये ऑडियो तुम लोग की आवाज नहीं आती है, मुझे इतना अच्छा लगता है बच्चों को सुनना, बच्चों की आवाज नहीं आती मुझे, या मैं कि कान खराब हो गए.
Okay, so you have this. First, you calculate the number of moles. You need 1:1 ratio is what you need for complete neutralization, right? This is a neutralization reaction. So यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 0.5 है ना बच्चे? 0.5 मोल्स. और यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 0.5 इंटू 0.25. 0.5, ठीक है. तो ये हो गया 0.125. ठीक है. So obviously this is number of moles is more than this, right? So obviously you know that 0.125 will consume 0.125 of HCl, correct? So obviously we know that the resulting solution is going to be acidic, right? Right? So 5 में से 0.5 में से 0.125 आप सब्ट्रैक्ट कर दो. उतना तो न्यूट्रलाइज हो गया, राइट? उतना तो न्यूट्रलाइज हो गया, करेक्ट ना बेटा? तो ये बचा आपका 0.375, है ना? 0.375 मोल्स बचा. अब कितने ml में बचा बेटा? 500 plus 250 in 750 ml of solution, करेक्ट? अब आप इसकी मोलैरिटी ढूंढ लो. अब आप इसकी मोलैरिटी ढूंढ, करेक्ट है? जितनी भी आ रही है. 0.375 0.5 HCl, right? 0.5 moles, right? 0.5 मोल HCl आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी आ रही है. और इसका आपका pH निकालना हो तो pH is equal to minus log of H+. This is the point. ठीक है. हाँ, और जहां तक बात हो रही थी पानी की मोलैरिटी निकालने की, तो सपोजिंगली आपके पास 100 ग्राम वाटर है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. ठीक है. तो आप कैसे निकालोगे? मोलैरिटी निकालोगे 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100. मोल्स और मास और वॉल्यूम तो सेम आ गया ना? ये मोलैरिटी है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है. पानी की मोलैरिटी फॉर वाटर. ठीक है. तो कल हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और बाकी सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करेंगे, सो दैट यू कैन गेट अहेड एंड हैव मोर कॉन्फिडेंस in these terms. But I will tell you and the laws also. मैं लॉज इसके बाद कराती हूँ जनरली. लॉज एंड वो क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो करा के खत्म करा के एकदम, चाहे सैटरडे भी सैटरडे डाउट नहीं लेके, हम लोग भले मंडे डाउट्स ले लेंगे बट सैटरडे तक ये चैप्टर हम खत्म कर देते हैं. लेट्स जस्ट फिनिश इट सो दैट ओवर द वीकेंड संडे आपके पास वो टाइम रहेगा कि आपको क्वेश्चंस कर पाए. ठीक है. तो कल देते हैं वर्कशीट, बट अभी आप यू कॉन्सेंट्रेट, फिनिश ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ या कुछ करो. नो नो नो, फटाफट फटाफट करो. आपको कोई प्रेजेंटेशन के आपको मार्क्स थोड़ा ना मिल रहे हैं. ठीक है. और सुबह उठने का थोड़ा बना है चैनल, हुआ है स्टार्ट. रात को नहीं जगना है, ठीक है? नो वेकिंग अप एट नाइट, नो लेट आवर्स. ओके. सुबह सुबह आप उठिए, अभी तो गर्मी चल रही है, नहा धो के भगवान से पूजा करके भैया अपना बैठो पढ़ने. ठीक है. सुचिता हंस रही है, हमसे तो नहीं उठा जाता है, हम क्या करें, हम तो रात में जागते हैं. नहीं जागना रात को, बेकार है रात. ठीक है. ओके. चलो. ओके देन आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. ओके जी. Thank you, ma'am. ओके, टेक केयर.